Namaskar dosto. Good evening and welcome to yet another interesting session with Fertility Dost. Today we'll talk about male infertility. Usually people says कि why to talk about male infertility in open और हमने भी देखा हमारी सोसाइटी में जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम सवाल पूछते हैं और जब भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि why this couple is incomplete, we can say that family is incomplete, तो हम हमेशा फीमेल से ही सवाल करते हैं. We just make a beeline towards the female and ask her what happened, क्या हुआ, इतने साल हो गए, ऐसा क्यों. हम कभी भी कोशिश नहीं करते कि किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, किसी मेल से यही सवाल पूछे कि क्या हुआ, इतनी देर क्यों. सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेल इनफर्टिलिटी. ऐसा नहीं है कि हर चीज़ फीमेल से रिलेटेड है. 50-50% की कंट्रीब्यूशन है, लाइफ पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप है. सो व्हाई टू लीव वन पार्टनर बिहाइंड. So why this discrimination? हम ऐसा नहीं करेंगे. Today we'll talk about it. And to talk about this, we have very senior doctor with us, Dr. Akash. And interestingly, आज हम सिर्फ मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात ही नहीं करेंगे. हम ये भी सुनेंगे उनसे कि कैन मेल इनफर्टिलिटी बी क्यूर्ड. हमने बहुत सारे केसेस में देखा, वी हैव हर्ड दैट पीपल सेज दैट जीरो मोटिलिटी, जीरो काउंट, व्हाट टू डू. So, do all these zeros have a solution? Yes, they do have. टेक्निक्स अलग हैं, टेक्नोलॉजीज फर्क है, सॉल्यूशंस का सोचने समझने का तरीका अलग है, बट अल्टीमेटली यस, वी डू हैव अ सॉल्यूशन. एंड for this session, thank you Sheel for arranging this. And many of our viewers are like in and around Hyderabad. They are really happy to have Dr. Akash on our platform today. So let's start, and I'll just add Dr. Akash to the main screen, and then viewers, we'll start with the session. आप प्लीज अपनी queries, अपने questions related to this topic और भी कुछ हो अगर, तो please start pouring in, and I'll try to answer each. And we'll just let me first add Dr. Akash, and then we'll start with the session. Namaskar, Dr. Akash, and welcome to Fertility Dost. Namaskar, Purnima ji. So viewers, today we have Dr. Akash with us, and Dr. Akash is a chief clinical embryologist and scientific director at Hegde Fertility, Hyderabad. So male fertility है या embryo से related questions हैं, then please start pouring your queries. He's been practicing male fertility and embryology since 2011. He is an active member of national and international fertility organizations. He specializes in male fertility treatment with surgical retrieved sperm. This is very interesting topic, Dr. Akash. और हम चाहते हैं कि आज की इस इंटरेक्शन में we can guide our viewers properly towards this main topic, that can male infertility be cured? Okay. Thank you once again, Purnima ji, for inviting to this platform. And आपने already जैसे कहा है, like you have told, कि male infertility is often neglected, and that is the truth at the end of the day. कि हम always the female gets asked the question कि बच्चा क्यों नहीं है, right? And depending from community to community, कोई 2 महीने, 6 महीने, साल भर, और मानो 2-3 साल के बाद तो मतलब आप किधर भी जाओगे तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी क्या हुआ, गुड न्यूज कब दे रहे हो, गुड न्यूज कब दे रहे हो, राइट? तो इसके लिए ऑलवेज फीमेल्स गेट क्वेश्चन. सो बट as rightly said by you, it is the male and the female who are equally responsible. They are partners in everything, and fortunately or unfortunately they are equal partners in infertility as well. जो निसंतान रहने का उसमें equal chance है. तो हम लोग, आप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अगर देखोगे तो उन्होंने बोला कि दुनिया में करीब करीब 5 करोड़ के ऊपर कपल्स है जिनमें इनफर्टिलिटी है. सो दैट्स अ ह्यूज नंबर. यू सी 5 crores इज नॉट लेस जिनमें ये प्रॉब्लम देखी गई है. तो इनमें से जो रहेंगे उनमें 1/3, करीब करीब लगभग 1/3 में मेल्स में प्रॉब्लम होगा, 1/3 में फीमेल्स में होगा, और 1/3 में दोनों में होगा. सो इट्स इक्वल 50-50 ओवर देयर. बट वाई डू द मेल्स गेट नेग्लेक्टेड? एक तो ट्रेडिशनली कि यहाँ पे इंडिया में स्पेशली खासकर कि जो प्रेगनेंसी लाने का बर्डन है, अगर मैं कहूँ उसे बर्डन, दैट गोज टू द फीमेल.
a wrong conception, I would say. Males are equally responsible. नेक्स्ट थिंग होता है कि एक आम तौर पे दिमागी तौर पे ये बना रखा हुआ है साइकोलॉजिकली कि इनफर्टिलिटी और मर्दानगी दोनों को लिंक करते हैं, जो कि बहुत गलत है. देयर आर Right. वेरी फ्यू केसेस जहाँ पे मैस्कुलिनिटी, एबिलिटी टू परफॉर्म इंटरकोर्स इज रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी एज सच, वरना दोनों अलग अलग है. ये धारा बिल्कुल गलत है कि दोनों वन एंड द सेम है. थर्ड एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सोशल स्टिग्मा जो इससे अटैच्ड है कि ये कैसा होता है, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग विच पीपल विच स्टॉप्स द मेल्स फ्रॉम टेकिंग अ प्रोफेशनल हेल्प. तो Right. इनमें और वन ऑफ द अनदर रीजन आई वुड से इज इट डजंट हैव एनी सिम्टम्स. फीमेल्स में जैसा पीरियड्स के टाइम पे प्रॉब्लम होता है ऐसा होता है, तो मेल्स में देयर इज नो सिम्टम एट ऑल. majority of my patients and all the patients with male infertility don't have any symptoms at all. तो उन्होंने में कुछ मालूम ही नहीं होता है कि उनका किस वजह से इनफर्टिलिटी हो रहा है. असल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. सो वो लोग कब लेना चाहिए, ऐसे लोग कब अप्रोच होना चाहिए? तो अभी इनफर्टिलिटी के डेफिनेशन के हिसाब से जब 1 साल के लिए रेगुलरली ट्राई कर रहे हैं और बच्चा नहीं हो रहा है, तो दे शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल फॉर हेल्प. So it should they, it's always they, not male or female, both together should consult for help, right? Right. एंड मेल्स में हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं सीमेन एनालिसिस, शुक्राणु के लिए जो टेस्ट करते हैं. तो इसके थोड़े गाइडलाइंस है कि 3 दिन गैप के साथ करना चाहिए, प्रॉपर कलेक्शन होना चाहिए, इट शुड बी एट अ प्रॉपर लैब, और उसका जो कंटेनर्स होता है वो भी उसके लिए स्पेशली डिजाइंड होता है. तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए वी हैव टू कलेक्ट द सीमेन एनालिसिस एंड गेट इट डन इन द राइट वे. और दिस इज द वेरी सिंपल एंड बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, ठीक है, बट इट इज नॉट द ओनली टेस्ट विच इज देयर. तो दिस इज फर्स्ट वेन एवर मेल कम्स टू फॉर ट्रीटमेंट, उसका हिस्ट्री लिया जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है, क्या है पहले से. जैसा टेस्टिस होता है नॉर्मल प्लेस में नहीं हो सकता है, कोई प्रीवियस सर्जरी से हो सकते हैं, कुछ हैबिट्स होते हैं जैसे स्मोकिंग है या अल्कोहल एक्सेस है तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, और देयर कुड बी सर्टेन ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स, सर्टेन एक्सरसाइज रिलेटेड थिंग्स हो सकते हैं. तो ये सब चीज़ हम हिस्ट्री में पूछते हैं, और उसके बाद एक क्विक चेकअप होता है कि लोकली कुछ इश्यूज तो नहीं है, और उसके बाद हम एक सीमेन एनालिसिस ज़रूर करा के देखते हैं. तो सीमेन एनालिसिस से हमें मोटा मोटा पता चल जाता है, विल कम टू नो ब्रॉडली whether there is a gross problem or not. हम सीमेन एनालिसिस में you'll see for the sperm count, motility and morphology. These are the 3 major parameters that will look into it. और इसके बाद अगर हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखता है तो देन दे कैन कैरी ऑन एज सच एंड हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बोलते हैं. और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है तो देयर आर ट्रीटमेंट्स लाइक IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन है, सिंपल ट्रीटमेंट रहता है. या प्रॉब्लम ज़्यादा रहे तो IVF या ICSI बोल के होता है. अगर हमें दिख रहा है कि मेल्स को कुछ ज़्यादा एवेल्युएशन की ज़रूरत है तो दे आर सर्टेन टेस्ट एडिशनली, जैसे हम हार्मोनल टेस्ट करते हैं, और थोड़े स्पर्म DFI बोल के होता है, या जेनेटिक टेस्ट होते हैं, कैरियोटाइपिंग. तो ये सब चीज़ करने से हमें मालूम होगा कि इनमें और कुछ एडिशनल स्टेप्स लेना है क्या ट्रीटमेंट के लिए, और विच लेवल ऑफ ट्रीटमेंट वुड बी बेटर फॉर देम. दिस बीइंग सेड, हम जब ये सब चीज़ करके देखेंगे तो वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ अ मेल and what is the level of treatment that is required. And coming to the topic of today, like it is about the cure, yes, male fertility definitely can be cured. See, infertility क्या है, बच्चे नहीं होने का है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, उसका क्योर क्या रहेगा कि हम बच्चे उनको they get pregnant, their partners get pregnant, that itself is cured. So definitely it is possible in quite a good number of cases with low level of treatment. Some require higher level of treatment which is applied on case to case basis, and surprising कि even zero count और होता है उनमें भी हम देख सकते हैं. Right. So Dr. Rakesh, सबसे पहले तो I think it's highly positive thing to say कि हाँ सब कुछ हो सकता है, because whenever we talk about male infertility तो people are like कि पहले तो treatment के लिए जाना ही नहीं है, और अगर जाना है तो क्या बिना treatment के कुछ हो पाएगा? So यहाँ पे it's a bit confused state with all of I won't say कि all but 50% of male members, but interestingly आज के टाइम में अगर हम देखें तो males are discussing their concerns, their medical issues more openly now. So we have query related to this interestingly from a male member only. This is regarding varicocele. So he really wants to know about, as he himself has a case of second grade varicocele. So he really wants to know what exactly is this second grade, और क्या ये सच में उसकी fertility को impact कर सकती है?
ओके, तो वैरिकोसील बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जो टेस्टिस रहते हैं मेल्स में, तो उसके आजू बाजू जो वेन्स सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई के लिए रहते हैं, तो वेन्स में जब स्वेलिंग होती है, सूजन आ जाती है, तो उसे हम वैरिकोसील बोल के कहते हैं। तो इसके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 2 3 4। 1 है सो सबसे कम, 2 से ज़्यादा, 3 और 4 और ज़्यादा। तो हम आमतौर पे ये बोलते हैं कि वैरिकोसील जो है वो ट्रीट करने पे काफ़ी लोगों में हम स्पर्म काउंटर में इम्प्रूवमेंट देखते हैं। सो डेफिनेटली वैरिकोसील को करेक्ट किया जा सकता है। इट्स अ स्मॉल सर्जरी ओवर देयर जिसके थ्रू हम करेक्ट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम वैरिकोसील हम आम तौर पे लेंगे तो कई लोगों में हमें वैरिकोसील मिलेगा। जैसा आप किडनी स्टोन्स का बोलोगे, तो नॉर्मली आप पॉपुलेशन में एक 100 लोगों को ले लोगे तो किसी 2-4 लोग को किडनी स्टोन निकलेंगे। पर उन्होंने निकलेंगे। उनमें क्या ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है? नहीं। अगर उन्हें पेन हो रहा है या कुछ ज़्यादा बड़ा साइज़ है या कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, तो ही हम ट्रीटमेंट करेंगे। सिमिलरली वैरिकोसील के लिए भी ये अप्लाई होता है। हर एक जना जिसको वैरिकोसील है उसको ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है। खासकर जिनके स्पर्म काउंट और अगर कम हो रहे हैं, उन्हें कोई दर्द होता है, इफ देयर इज़ एनी पेन, तो उसके लिए करना है। और अगर टेस्टिस साइज और इफेक्ट होता है तो उसके लिए करना है। नेक्स्ट, अभी के जो गाइडलाइंस है वो कहते हैं कि हमें ग्रेड 2 वैरिकोसील को मेनी पीपल कैन कंसीव, प्रेग्नेंट हो सकते हैं इवन विदाउट ट्रीटमेंट। तो उसके लिए कोई मेडिसिन होते हैं जिनके वजह से जो डीएफआई बोल के बोलते हैं, स्पर्म की जो क्वालिटी इफेक्ट होती है वो बेटर होती है। तो अगर कोई पेशेंट इसके बावजूद सक्सेसफुल नहीं होता है गेटिंग प्रेग्नेंट, और जैसा आईवीएफ और फेल होता है, तो वो केसेस में वैरिकोसील का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है फिर वैसे टाइम पे। नेक्स्ट, एज अ ग्रेड 2 varicocele, if the count, motility and everything is normal, coming to this specific case, it's not compulsory that he needs to get operated for it. They can try simple level of treatment, or agar if his count, motility and morphology everything is normal, they can try something called as timed intercourse, जब husband wife को मिलने के dates बताते हैं और IUI के से try कर सकते हैं। If it does not succeed, then IVF will be the first choice compared to varicocele surgery. Okay, right. And actually, they have two failed IVF cycles, but the samples, doctor is saying the sperm sample is quite good, and they had this frozen sample also. Okay. So So, हाँ प्लीज, एक्चुअली ही इज वरीड अबाउट इट दैट कहीं सैंपल में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, फाइनली जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो तो सैंपल में से ही आ रहा है। ठीक है, सीमेन सैंपल हम्म। दे रहे हैं तो स्पर्म आ रहा है। तो उसमें स्पर्म, वैरिकोसील कैन अफेक्ट टू वेज। इट कैन अफेक्ट क्वांटिटेटिवली, जब हमें फर्क दिखता है कि काउंट, मोटिलिटी जो हम पैरामीटर्स देखते हैं उसमें फर्क आ रहा है। और एक चीज होता है क्वालिटेटिवली, इट विल माइट नॉट कॉज अ चेंज इन द नंबर्स ऑफ दिस, बट क्वालिटी, स्पर्म की जो एक की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है, आगे जो एम्ब्रियो जो डेवलप होता है उसकी कैपेसिटी, और जो प्रेगनेंसी देने की इम्प्लांटेशन जिसे बोलते हैं, जो चिपकना बोलते हैं, और आगे हम्म। प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने की, तो ये चीज़ों में भी फर्क आ सकता है। सो इफ इट इज टू फेल्ड आईवीएफ, देन वी कैन हैव टू डेफिनेटली कंसीडर वैरिकोसिल सर्जरी एज सच। और उनका एक डीएफआई करा के देखना है, स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स बोल के होता है। अगर वो चीज़ में एलिवेटेड आ रहा है तो डेफिनेटली सर्जरी वुड बी एडवाइजेबल। Okay, so if you are in the session, please take note of these important points. That if your DFI is raised, then please consult your doctor. You can just suggest for surgery or ask for the surgery. Is it really important? And please, अगर आपका इस sample से पहले pregnancy या embryos अच्छे नहीं बने, तो as Dr. Akash suggested, you need to give another sample. But yes, surgery is the better option for you. डॉक्टर आकाश, वेरिकोसील से हट के जरा लाइफस्टाइल पे हम आते हैं। वी हैव दिस टेंडेंसी कि जिमिंग इज रियली इम्पोर्टेंट, और आजकल तो हमें लगता है कि हेल्दी रहना इज रियली इम्पोर्टेंट ड्यू टू पेंडेमिक, पोल्यूशन एंड स्ट्रेस एंड ऑल दैट। लेकिन क्या इतना जिमिंग करना, इतनी एक्सरसाइजेस अच्छी हैं? बिकॉज when we start going to gym, we just tend to flex our muscles and all that. For that, we usually had those big boxes of whey protein and all that. So what you advise for such males, or we can say that gymming oriented males? एक्सरसाइज और हेल्दी रहना तो वैसे भी इन जनरल हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट जस्ट इनफर्टिलिटी। तो वो तो बहुत ज़रूरी पार्ट है। यू टेक अ माइल्ड टू मॉडरेट, हम एज फार एज इनफर्टिलिटी इज कंसर्न वी एडवाइज माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज। हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है, जो बॉडी बिल्डिंग और बोलते हैं उस तरफ नहीं जाना है एज फार एज फर्टिलिटी इज कंसर्न।
उसके 2-3 कारण हम बोल सकते हैं। पहला कारण होता है, आप जैसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जिम करोगे तो लोकल हीट बहुत बढ़ जाएगी आपको, ठीक है। दैट इज़ अ प्रिजम्पशन कि आपकी हीट जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इट कैन अफेक्ट योर स्पर्म। सी आपका हम्म, स्पर्म जो प्रोड्यूस हो रहा है टेस्टिस में हो रहा है, जो कि बॉडी के बाहर है, क्योंकि नेचर ने उसे ऐसा बनाया है कि उसको 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम पे चाहिए फॉर द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म। तो आप जब जिम करोगे तो बहुत एक्सेसिव हीट फॉर्म होगी एक्सेसिव जिमिंग में, विच इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हेल्प, रादर काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इट वुड बी रादर दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग अप इट माइट गो डाउन, फर्स्ट थिंग। ओके, सेकेंड थिंग, दे कैन बी हार्मोनल चेंजेस एसोसिएटेड विद इट। थर्ड थिंग, आपने जो उठाया मुद्दा कि ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, इफ यू टेक अ वेरी सर्टिफाइड वन विच इज ओनली अ वे प्रोटीन वन, then yes you can take to a certain extent, but otherwise we don't recommend taking them, because आपको ऑफ द काउंटर जो मिलता है उसमें एडिटिव्स क्या क्या होते हैं आपको नहीं पता। और स्पेशली ये राइट, जो मसल्स बनाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए होते हैं, उनमें कई नमूने के केमिकल्स ऐड किए जाते हैं विच इज नॉट गुड फॉर इनफर्टिलिटी। एंड स्पेशली योर एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स या वैसे वाले अगर एडेड हो गए तो दे माइट गिव यू वेरी गुड मसल्स, ही माइट लुक वेरी गुड एंड टू लुक एट फिजिकली and very good physical development, but his sperm would go the other way around. So राइट। टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स और भी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए इनफर्टिलिटी के लिए, काउंटर प्रोडक्टिव होता है। So we can say that आप you can have healthy food from your kitchen और प्रोटीन हमारे किचन फूड में डेली रूटीन में है। So आपको we would advise that please don't spend your money on that big boxes. Uh, Dr. Akash, usually I don't know whether it is true or it's myth, पर कहते हैं कि मेल के साथ प्रॉब्लम्स इश्यूज आते नहीं हैं, अगर आते हैं तो वो इजीली एंटीऑक्सीडेंट्स खाने से खत्म हो जाते हैं। इज इट रियली ट्रू? बिकॉज वी हैव वन क्वेरी रिलेटेड टू दिस सेम। Antioxidants is beneficial for male infertility. In what quantity it should be taken? ओके, तो एज फार एज हमारा मेल ट्रीटमेंट में आता है, जो द मेडिसिन व्हाट वी गिव, सो एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर्म योर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। So what are antioxidants? You have plentiful of them in nature in your fresh fruits, citrus fruits, vitamin C, vitamin E से जो भरपूर होते हैं, they are nothing but antioxidant rich fruits. That's why we advise to eat them. So when we are not taking it naturally, so that's why we need to supplement it that artificially, right? So that's why antioxidants we need to supplement. It improves your quality as well as quantity in some of the meals. So that's the first line of treatment. Antioxidants as such in terms of your daily regular fruits are low. You can take 2 helpings of fruits per day, so that should be good. Especially concentrate on fruits which are rich in vitamin C and vitamin E के जो होते हैं. Plus you can have dry fruits, what we say commonly, walnuts और के जो होते हैं. You can have Hmm. milk if you are a vegetarian. If you are non-vegetarian, and you can take eggs, boiled eggs should be good. Fish should be good. उसमें omega की fatty acid बोल के होता है, which is very helpful in sperm production and other sperm functions as well. So eating a healthy food is definitely a big up as far as fertility is concerned. और दूसरे लाइफस्टाइल से रिलेटेड एंटीऑक्सीडेंट्स के वजह से जैसा होता है तो उसका काउंटर पार्ट भी रहेगा। सी वी आर डूइंग एंटीऑक्सीडेंट्स, सो एट द सेम Hmm. टाइम जो ऑक्सीडेशंस होता है जिस वजह से, सो दे वुड बी हार्मफुल। सो ऑक्सीडेशंस जिस वजह से बढ़ता है उसमें कॉमनली आपने जैसा पहले बताया विटामिन ये सॉरी वैरिकोसील का जो है वो एक चीज है। Next would be your stress. Too much of stress will raise your your oxidation levels, your ROS levels will increase. It will affect the sperm also drastically. That's why we definitely say all the patients, whether males or females, to reduce their stress level. Stress level could be anything. It could be excessive stress at the workplace, or it could be stress level in your family matters as well. So don't carry stress too much around with you. It will definitely have a negative impact on your general health as well as your fertility status as well. Next, smoking is shown to increase your ROS, thereby decreasing your antioxidants level in the body, and thereby it can have a negative effect as well. And plus your chemicals exposure, too much of heat. So all these things, and certain patients in whom genetically they might be predisposed to have this increased ROS levels. So all these things put together will cause a lesser effect of antioxidants. So that's why antioxidant supplementation will definitely help them. And there are some preparations which are available, so definitely they'll be helping you in improving the sperm quality as well as the quantity. So antioxidants from the first line of treatment, they do help quite a few of patients, but there are no magic pills. Otherwise, like we had the first question where varicocele they had a problem, they would have definitely got cured with just the antioxidants alone. Right, right.
We can say that you definitely need to work on your lifestyle. So lifestyle part में Dr. Akash, you suggested that yes, exercise is important, but more of it not done. Protein intake is important, but again, supplements we don't want. So, what other things or what other changes would you advise our viewers? See, regarding protein supplementation and other things, what we had discussed, there's a saying, too much is too bad for anything, right? So it applies over, अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज नहीं. की. So same thing applies over here. Do exercise, but in moderation. Okay. Take your proteins intake, make a good healthy intake, but don't get maniac about it. Gymming या इसके बारे में. Next, have a stress-free life. Stress is very important, which is already told. Next, have a good sleep. In some persons, might be 6 hours of sleep is sufficient. In some, might be 8 hours. But your body will give you a sign that it is not being sufficient. So have a sufficient amount of sleep. Normally, we say 6 to 8 hours is sufficient for most of the people. Do that. And next, you have to take care about certain workplace occupational exposure might be there to certain chemicals या pesticides होते हैं जो farming community है हमारे जो किसान भाई है उन लोगों में ये commonly देखा गया है. They might be spraying the pesticides and everything without wearing the proper gloves, without taking proper the precautions. तो उस वजह से they can get exposed to these chemicals. Your plasticizers nowadays, so it has become common knowledge. They are advertising also BPA free, bisphenol A free. That is one of the common things what is over there. There are hundreds and thousands of chemicals which can change your endocrine assets. So try to avoid to live a health. Try to avoid to have these chemicals out of your regular life. More of natural food over there. Plus occupation का छोड़ के एक normal, it could be a simple thing. Some might feel it's a frivolous thing, but try to avoid too tight undergarments. आजकल tight jeans और का बहुत चलन है. So when you wear a jeans which is too tight or any too tight undergarments, it will again push your testicles closer to your body. You are going against the nature again. So कहीं कहीं you can wear boxer shorts in that case. So they would be more helpful. And you can wear jeans as such, but not too skin tight that kind. At least till your fertility problem is solved. Right. Because you really need to take care of these important things. और हमें लगता है डॉक्टर आकाश ये बहुत छोटी चीजें हैं, इनको हम इजीली यूज कर सकते हैं इन आवर डेली लाइफ, डेली रूटीन, बट फिर भी हम शायद ये भूल जाते हैं. एंड once I was interacting with one doctor and he mentioned that अगर आप एक्सरसाइज करके घर वापस आते हैं then please change your clothes and take a shower. That is really important. You don't want too much of the heat lingering around you. Right. We'll take few queries over here. I think I missed. Okay. So one very important question over here is usually we say is that frozen eggs are good for conception, but या कहीं एक myth है कहिए कि people says कि frozen sperm sample तो होना ही नहीं चाहिए. So is it really so? It's other way around. Okay. So rightly said by you, it's a myth. See, हमारे freezing के time पे क्या होता है ना? See, your number decreases. Okay, the number of eggs or sperm. So I think they got confused between egg and embryo. Egg and embryo. So आपका जब हम बोलते हैं FET जो बोलते हैं हमारे टर्म में frozen embryo transfer, that definitely is a good thing. आपको जब एम्ब्रियो ज़्यादा बनते हैं जितने हम ट्रांसफ़र करते हैं 1 या 2 जो ट्रांसफ़र करेंगे उससे ज़्यादा अगर हमें बनते हैं अच्छे क्वालिटी के जो हम यूज़ कर सकते हैं आगे के साइकिल में तो वी फ्रीज देम डेफिनेटली क्योंकि पेशेंट को वो पूरे इंजेक्शंस नहीं लेना पड़ेगा पूरा साइकिल वापस नहीं करना पड़ेगा एंड यू हैव एम्ब्रियोज विच आर रेडी एंड विच विल हम जैसे उन्हें फ्रीज करते हैं वो वैसे ही बाहर आते हैं. और एफईटी में रादर 5 to 10% थोड़ा आपका इंक्रीज चांस होता है क्योंकि आपने वो सब इंजेक्शंस और नहीं लिए हैं जो आपको आईवीएफ के टाइम पे लेना पड़ता है जो फीमेल्स को. तो एफईटी में इन दैट वे एम्ब्रियोज डू बेटर रिजल्ट, दे गिव स्लाइटली बेटर रिजल्ट्स बट दैट्स नॉट फॉर एवरीवन कंपल्सरी. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग आया कि स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन की फ्रोजन एग्स वर्सेस फ्रोजन स्पर्म. सी हम जब फ्रीजिंग एग और स्पर्म का करते हैं योर नंबर गो डाउन अ बिट. ओके तो अभी जितने स्टडीज आए हैं रिसेंटली आपका जो एग है इवन दे सर्वाइव दिस फ्रीजिंग वेरी वेल. टेक्निकली हम उसे विट्रिफिकेशन बोल के बोलते हैं. तो इवन दे सर्वाइव वेरी वेल. But then even in them 8 to 9 of them survive out of 10. So egg is a very precious commodity
and they are very tender, like females, they are very delicate, right? So definitely they would not survive it so well compared to the sperm. बट स्पर्म का जो होता है हमारे पास नंबर ज्यादा है, यू हैव इन मिलियंस, नॉर्मल काउंट इज 15 million/ml। तो आपका जब सर्वाइवल होता है उसमें अराउंड 40%, गिव और टेक 10% का सर्वाइवल रहता है। सो आप जब 15 मिलियन से आप अगर 7-8 मिलियन पे भी आ जाओगे तो इट विल नॉट मेक अ ह्यूज डिफरेंस फॉर योर आईवीएफ ट्रीटमेंट पर से। बट अगर आपका एग नंबर कम हो रहा है तो ईच एंड एग वुड बी वेरी प्रेशियस। कोई कोई पेशेंट्स को एक एग आने के लिए भी वी स्ट्रगल फॉर समटाइम्स बिकॉज ऑफ द बायोलॉजी। So definitely for egg, as far as it is concerned, I would say preferably it should be a fresh IVF or ICSI, जो भी करना चाह रहे हैं वो fresh होना चाहिए preferably। And as far as sperm is concerned, उसके लिए हम freeze करके करते हैं तो भी उतना effect नहीं होता है। Saying that, हम at the same time egg freezing और भी कर रहे हैं अभी। अभी सोशल फ्रीजिंग जो बोलते हैं, दोज हु वांट टू पोस्टपोन देयर प्रेगनेंसी फॉर व्हाटसोएवर रीजन, तो फीमेल्स में एज के वजह से इट अफेक्ट्स देम अ लॉट, द एग प्रोडक्शन का होता है। मेल्स में एज का इफेक्ट उतना ज्यादा यू डोंट सी दैट मच ऑफ अ ड्रास्टिक इफेक्ट, बट इन फीमेल्स वंस दे क्रॉस 30 it starts to come down the fertility, and once you cross 35, they say 35-37 years of age your fertility is gone by nearly 50%. So at that time we advise them to freeze the eggs. But if the partner is decided, if they are already into a marriage, then I don't see any reason why we should not make the embryos and freeze it. Right. I think nature ने भी discrimination किया है with male and female. I wouldn't say exactly discrimination. I would say कि rather they are so precious, right? So each one matters to them. ये ऐसा नहीं कि sperm लिया, freeze किया, छोड़ दिया, बाद में देखेंगे. So Right. you can think it that way. बिल्कुल ठीक। शुरू में ही हमने बोला कि positivity is there in this session. So we'll take another query. What cause hypothalamus dysfunction? Can someone get pregnant with this disability? Okay. So hypothalamus बोल के एक हमारा छोटा सा ऑर्गन होता है जो ब्रेन के अंदर होता है। So it does the hormonal function for us. So उधर से हमारे सिग्नल्स आते हैं, GnRH और RH और हार्मोन्स जो रहते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स आते हैं, दे कम एंड एक्ट ऑन अ ऑर्गन कॉल्ड एज पिट्यूटरी होता है, उसके ऊपर से उधर से आपको FSH एंड LH आते हैं, एंड दीज यूजुअली प्यूबर्टी के टाइम पे आपको ये सब स्टार्ट होता है, साइकिल बनना एक्टिवली, जिसकी वजह से फर्टिलिटी एस्टैब्लिश होती है। दिस हैपेंस बोथ इन द मेल्स एज वेल एज द फीमेल्स। इन फीमेल्स यू कैन सी इन टर्म्स कि उनको पीरियड्स और आना शुरू होता है यूजुअली टीनेज के आसपास जो स्टार्ट होता है। सेम थिंग इन मेल्स में भी चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग दिस टीनेज, क्योंकि ये ज्यादा एक्टिव होना शुरू होता है। नेक्स्ट, अगर हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन होगा तो ऑब्वियसली इट वुड अफेक्ट समथिंग, हमारा जो रॉ मटेरियल विच इज पुशिंग दिस स्पर्म प्रोडक्शन इन मेल स्पेसिफिकली, अगर वो अफेक्ट होगा तो डेफिनेटली इट विल आल्सो अफेक्ट योर स्पर्म प्रोडक्शन एज वेल। तो वहां पे देखना है किस लेवल में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, इज इट हाइपोथैलेमस और इज पिट्यूटरी। और अगर हाइपोथैलेमस का डिसफंक्शन होता है, थोड़ा हम जो बोलते हैं कैलमन सिंड्रोम, विच इज वेरी अनकॉमन एज सच, बट अगर उनमें अगर उसके वजह से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, then these males usually do well when we supplement them externally these hormones. Yes, it takes time, you have to be patient enough, because normal जो sperm cycle होता है बनना शुरू होने से पूरा बाहर आने तक आपको 2.5 से 3 महीने लगते हैं इन नॉर्मल मेल्स, और जिनको हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन होगा इट माइट टेक 6 months, 1 year, sometime 2 years also. So yes, it's treatable. अगर हार्मोन डेफिशिएंसी से हो रहा है तो quite a good number of the patients actually respond well with this treatment. More than 60 to 70% of the patients में आपको sperm production मिलेगा, और डिपेंडिंग ऑन कि किस लेवल में sperm production हो रहा है वो लेवल का ट्रीटमेंट दोगे तो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी also quite well established. Okay. I So am we can assuming this say is from the male end. This function is that, right. dysfunction they are saying is from the male end. Right. So we can say that don't worry. Obviously, you will get the right treatment with the right doctor. And if you are nearby Hyderabad, then please you can connect with Dr. Akash. And if you want to consult or connect through us, please send us a message or mail us. The official number and website is flashing on the main screen. Just send us a message and we'll arrange for everything for you. Dr. Akash, when we talk about females, we just talk about कि आप day 2 पे hormonal test करवा लीजिए. So what about males? What about these hormonal tests? हमेशा females के साथ ही है कि males? Again, I can say the comparison तो is there. डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे, तो जी Right. हार्मोन मामले में हम डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेट करेंगे, एंड दैट इज फॉर अ बेटर थिंग इन टर्म्स ऑफ मेल, क्योंकि नॉट एवरी मेल रिक्वायर्स अ हार्मोनल एवल्यूशन.
जैसा मैंने कहा सीमेन एवेल्यूएशन कंपलसरी होगा अगर इनफर्टाइल कपल है तो, बट एट द हम्म। सेम टाइम हार्मोनल एवेल्यूएशन हम तब करते हैं जब हमें कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखता है। जैसा हमें अगर दिखता है कि उनका स्पर्म काउंट बहुत कम हो रहा है या जिनका स्पर्म काउंट जीरो रह रहा है, उनमें हम करते हैं। और हमें दिखता है कि उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बराबर से डेवलप नहीं है, या एग्जामिनेशन के टाइम पे कुछ फाइंडिंग मिलता है, तो ऐसे केसेस में, या और एक केस होगा जहाँ पे हस्बैंड वाइफ के familial relationship, marital life में, intercourse में difficulty हो रही है। So in these cases, we would like to get the hormonal evaluated. Otherwise, as a routine, no. Many of the patients, अगर उनका count, motility और morphology normal रह रहा है, तो hormones don't have a much important role to play. See, and why this discrimination? Simple thing is, you have a test called semen analysis, जिसमें you can see it outside the sperms, the functional cells which are being there, आपको डायरेक्ट बाहर देखने को मिल रहे। इन फीमेल्स वी डोंट गेट द चांस, यू नो, यू आर एज्यूमिंग कि एग हम्म। रिलीज हो रहा है तो ओव्यूलेशन हो रहा है, एंड यू आर एज्यूमिंग दैट द एग इज ऑफ प्रॉब्ली मे बी ऑफ गुड क्वालिटी, सो यू आर मेकिंग एजम्पशंस ओवर देयर, बट हियर आप डायरेक्टली देख रहे हैं द स्पर्म सेल, सो दैट्स व्हाई यू डोंट रिक्वायर हार्मोन एवल्यूएशन इन ऑल द पेशेंट्स। Right. And we just talked about before this DFI. So आजकल maybe we can say that for past 1 year or so, doctors are talking about DFI, and as a patient, we are much more concerned about this. Is it really so that these cases DFI percentage has been increased in recent times, या ये शुरू से थी और हमने अब इसको समझना शुरू किया है? एंड अगर ये रेज्ड है तो व्हाट एग्जैक्टली इसका इफेक्ट क्या आएगा इन आवर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग दिस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट एंड ऑल दैट? डीएफआई जब हम बात करते हैं, आप कॉमनली आजकल देख रहे होगे, इवन इन साइंटिफिक कम्युनिटी as far as infertility is concerned, there's a lot of talk going on about DFI right now. So राइट। DFI means DNA fragmentation index. इसमें हम देखते हैं कि कितने percentage of sperms are affected by this DNA fragmentation. See, at the end of this sperm का मेजर काम क्या है कि उसे एक को ये अपना डीएनए पहुंचाना है, जो हैप्लॉइड 23 क्रोमोसोम से वो सही इंटैक्ट तरीके में पहुंचाना है उसको एक तक। ठीक है, तो जब ये डीएनए में जब फ्रैगमेंटेशन यानी ब्रेकेजेस आते हैं, सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड ब्रेकेजेस होते हैं, या उसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं, जो डीएनए बेसेस बोलते हैं उनमें चेंजेस आते हैं, तो ये सब चीज़ होने के कारण उसका डीएफआई जो परसेंटेज होता है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल अगर आप फर्टाइल पॉपुलेशन में देखोगे तो मोस्ट ऑफ देम विल हैव अ डीएफआई ऑफ लेस देन 15%। 15 to 25 जब होता है तो मॉडरेट एलिवेशन बोलते हैं, मोर देन 25 इज कंसिडर्ड एज सीवियर एलिवेशन ऑफ डीएफआई। तो इसके वजह से क्या क्या फर्क आएगा? इट्स नॉट दैट कि डीएफआई बढ़ेगा तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है, बट चांसेस ऑफ नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट आपको हाई रहेगा डीएफआई जब हाई होता है। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, आपके जो एआरटी ट्रीटमेंट जो बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दिस ट्रीटमेंट्स, द चांसेस ऑफ सक्सेस आल्सो गोज डाउन व्हेन द डीएफआई इज ऑन द हायर साइड। थर्ड थिंग, हाउ डू दे गो डाउन? द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो कम होता है। सी, फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा आपका डीएफआई हाई रहने पे भी, बट आगे का जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है खासकर D3 के बाद जब शुरू होता है स्पर्म का इफेक्ट आना शुरू, तो वो टाइम पे आपका डीएनए अगर डैमेज होगा तो डेफिनेटली इट विल हैव इफेक्ट ऑन द एम्ब्रियो एज वेल। आपका जो 50% डीएनए मेल से आ रहा है तो डेफिनेटली अगर उसमें डैमेज होगा तो इट विल अफेक्ट द स्पर्म एंड द एम्ब्रियो फ्यूचर विच इज फॉर्मिंग एज वेल फॉर श्योर। तो इसके वजह से आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ एम्ब्रियोज जो डे 5 तक रीच हो गए वो कम हो सकते हैं। नेक्स्ट, आपका जो इसके बाद हम जब ट्रांसफर करते हैं बच्चेदानी में यूट्रस में, तो उसको जो इम्प्लांटेशन होता है, सो दैट कैन बी रिड्यूस ड्रास्टिकली ऑल्सो बिकॉज ऑफ द। नेक्स्ट थिंग हो, इसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन फेलियर। सो आपको देखने पे एम्ब्रियो विल बी वेरी गुड, एवरीथिंग विल बी वेरी गुड, बट इट विल नॉट गिव यू प्रेगनेंसी। नेक्स्ट थिंग आफ्टर दिस इज इम्प्लांटेशन हो गया, प्रेगनेंसी आ गया है, लेकिन उसके बाद हमें सी वी आर सीइंग ओनली 5 to 6 days ऑफ दिस, और प्रेगनेंसी आने तक टेस्ट होता है लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 to 14 days, बट योर प्रेगनेंसी हैज टू कंटिन्यू फॉर 9 months नियरली। तो राइट। डीएफआई इज अफेक्टिंग यू एट अ लेसर लेवल। तो जैसा आपको कम लेवल पे इफेक्ट होगा तो यू कैन सी दैट इफेक्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, इट माइट टेक लॉन्गर टाइम फॉर इट टू मैनिफेस्ट। तो वो टाइम पे प्रेगनेंसी तो आ जाएगा बट एबॉर्शन ज्यादा हो जाएंगे, खासकर राइट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन बढ़ने का चांस होता है ये डीएफआई से। सो देयर आर सो मेनी वेज इन विच योर डीएफआई कैन अफेक्ट इट ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्टेज, राइट फ्रॉम योर स्पर्म fertilization to your embryo development to your getting pregnancy to carrying forward of your pregnancy to a healthy life child. So this are the multitude of parameters by which it can affect. तो इसका solution क्या है? Next thing, DFI का
ऑलरेडी हमने जो एट लेंथ डिस्कस किया है कि एक लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से होगा। नेक्स्ट योर वैरिकोसिल सर्जरी का होता है। नेक्स्ट होता है आपका जो एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं उसके वजह से होता है। हम्म, नेक्स्ट आपका होगा कि हम कुछ थोड़े टेक्निक्स होते हैं जिसके वजह से हम डीएफआई कम कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट आया है, लास्ट फ्यू ईयर से अप्लाई ज़्यादा हो रहे हैं, जिसे हम मैक्स या माइक्रोफ्लूइड्स बोल के बोलते हैं। और थोड़े पेशेंट्स में इवन टेस्टिकुलर स्पर्म को हम डायरेक्ट निकालते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि डीएफआई परसेंटेज कम होता है। सो इवन दीज कैन बी अप्लाइड। दैट बीइंग सेड, ये इट इज नॉट फॉर एवरीवन कि डीएफआई बढ़ाया तो स्ट्रेट अवे ये सब करना है। हो जिनमें रहा जैसा फेल हो रहा है वो सब तो करना है। DFI पहले से था, ओनली थिंग इज इट इज गेटिंग द साइंटिफिक एंड द जनरल पब्लिक ऑफ मोर ऑफ इंटरेस्ट रिसेंटली। जैसा मेल है। इनफर्टिलिटी तो है पहले से, बट उसे इंपॉर्टेंस अब मिल रहा है। DFI इज समथिंग सिमिलर। एंड एज के हिसाब से जैसा बढ़ता है, तो अभी थोड़े स्टडी से जो बता रहे हैं कि जैसा एज बढ़ेगा तो DFI भी इंक्रीज होगा आपका। तो देयर आर ऑल द पैरामीटर्स व्हिच वी नीड टू कंसीडर। राइट, राइट। सो वी कैन से दैट अगर आपका रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं और इम्प्लांटेशन फेलियर्स हैं, then DFI could be raised and it could be the reason for this. Yes, it could be one of the important reasons which we need to rule out, and we definitely look into it. हमारे जो इम्प्लांटेशन फेलियर्स होते हैं तो उनमें हम और एक जेनेटिक टेस्ट कराते हैं, जैसा कैरियोटाइपिंग बोल के होता है। Hmm. तो मेल्स में ऑल्सो दे कैन गेट अफेक्टेड। कैरियोटाइपिंग में हम आपके जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो 46 है या नहीं बोल के वो टेस्ट करते हैं। सो लाइक आई सेड, नॉट इन ऑल केसेस बट फेल्ड केसेस होते हैं या स्पेशली इंडिकेटेड केसेस होते हैं, तो कैरियोटाइपिंग ऑल्सो इज वन ऑफ द टेस्ट विच विल हेल्प अस इन दिस। तो ये इम्प्लांटेशन फेल्यूर में है या आपके प्रेगनेंसी लॉसेस में रिपीटेड स्पेशली, तो डीएफआई एंड कैरियोटाइपिंग हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। Right. Dr. Akash, we have one more query. मेरे लिए शायद ये वर्ड ही स्पेल करना बहुत मुश्किल है. What is oligosthenotetra ओलिगोएसिनोटेट्रोजोस्पर्मिया। teratozoospermia, right? In male infertility. जितना लंबा नाम है उतना ही लंबा प्रॉब्लम भी है वो। सो ओलिगोएसिनोटेरेटोजूस्पर्मिया है वो, दैट इज टेक्निकल टर्म। ओलिगो Right. यानी कम, यानी स्पर्म काउंट व्हेन इट रिड्यूसेस, नॉर्मल इज 15 मिलियन पर ml डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस के हिसाब से। अगर आपको 15 से ज्यादा है तो वो नॉर्मल है, उससे कम रह रहा है तो दैट इज एबनॉर्मल, उसे ओलिगोस्पर्मिया करते हैं। एस्टिनोस्पर्मिया इज लाइक व्हेन इट्स एस्टिनो मींस वीक। सो आपका स्पर्म तो है बट उसमें मोटिलिटी कम होती है, तो जब उसे हम एस्टिनोस्पर्मिया कहते हैं। टेरेटोस्पर्मिया बोलते हैं, टेरेटो इज एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, शेप जब नॉर्मल नहीं होता है तो उसे टेरेटो बोलते हैं, तो एबनॉर्मल शेप का होता है तो उसे हम टेरेटोस्पर्मिया कहते हैं। जो मेल जिसमें ये तीनों एक साथ देखे गए तो ऑलिगो एस्टिनो टेरेटोजूस्पर्मिया बोल के बोलते हैं। एंड ऐसे कंडीशंस को हम बोलते हैं कि दे डू वेल विद मोस्टली इक्सी और कन्वेंशनल आईवीएफ, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम ज्यादा लेवल है। हम स्पर्म के जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 3 पैरामीटर्स होते हैं। योर काउंट जो कम हो गया ऑलिगो में, देन योर मोटिलिटी जो कम हो गया एस्थीनो में, एंड योर मॉर्फोलॉजी जो अगेन कम हो गई है आपकी टेरेटो में। सो व्हाई आर दीज 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट? सी, आपके जब यूजुअली हस्बैंड वाइफ मिलते हैं तो जब सीमेंट डिपॉजिट होता है तो इट विल बी इन मिलियंस पर ml, बट वहां से जो स्पर्म अप ट्रैवल करके जाएगा वही जा पाएगा आगे। नॉर्मली एग विल बी रिलीज ओव्यूलेशन एंड इट विल कम इनटू योर ट्यूब्स, जो हम नाले बोलते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब से वहां पे एग आएगा एंड फर्टिलाइजेशन आपका स्पर्म और एग का वहां पे होगा एक साथ। तो आपका स्पर्म वहां से ट्यूब्स तक कैसे जाए? मोटिलिटी रहेगा तो जाएगा। वहां पे जाने तक आपको फ्यू हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ही रीच हो पाएंगे, कहाँ मिलियंस करोड़ों में है एंड कहाँ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स। एंड फिर उसके बाद जो होते हैं वहां पे स्पर्म जिनका शेप नॉर्मल होता है, सो व्हाट दैट हेल्प्स इज इट विल हेल्प इन द स्पर्म गोइंग इनसाइड द एग। सो आपका जो एग है एक ऐसा उसका लेयर होता है, जोना पेलिसिडा, और आजू बाजू क्यूमुलस सेल्स होते हैं। फॉर दैट स्पर्म टू एक्टिवली एबल टू गो इनसाइड, उसका शेप जब नॉर्मल होगा तो ही जा पाएगा। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक व्हेन यू आर ट्राइंग टू पियर्स समथिंग, इफ योर शेप इज हाइड्रोडायनामिक एंड एक्यूरेट शेप रहेगा तभी हो पाएगा। तो ये 3 चीज देखते हैं हम मेजरली। सो ये तीनों चीज में अगर प्रॉब्लम रहेगी तो ऑब्वियसली इट शोज दैट द प्रॉब्लम इट इज एट अ वेरी हायर लेवल, एंड मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स डेफिनेटली रिक्वायर ट्रीटमेंट। एंड कॉमनली हम बोलते हैं अगर आईवीएफ करके एक्सी करके देखना चाहिए। तो yes, one of the highest level of problem that they can have, and definitely do well with IVF and ICSI treatment. Okay, so we can say that yes, नाम बड़ा है, but it could be treatable. Treatable, yes, yes. Right.
सो आई होप यू गेट योर आंसर। और अगर आपने मिस किया है तो प्लीज री वॉच दिस होल लाइव सेशन, इट विल बी सेव्ड ऑन दिस लिंक ओनली, एंड वी ट्राई टू डिस्कस थिंग्स ओपनली। बट अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चंस फिर भी रह गए, आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं पूछ पा रहे हैं, then please send us a message. And Dr. Akash, someone asked here कि हम आप तक कैसे पहुंचे, तो प्लीज सेंड अस डायरेक्ट मैसेज, और यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली विद डॉक्टर आकाश ऑल्सो, ही इज इन हैदराबाद. And Dr. Akash, one more query: is masturbation is the cause of infertility? Yeah. So I'll come to both the queries. Someone was asking how to reach us. So you can just Google us. You can type my name, Dr. Akash Agarwal, and Higde Fertility. You'll be guided to the website. You can approach us for professional treatment for that. And the second question, whether masturbation affects you, affects the infertility as such, no. Masturbation, as far as scientifically is concerned, it does not affect infertility. The only scenario where I can see masturbation affecting fertility is if someone is having too much of masturbation and that is affecting their sexual life and the meeting frequency with the wife, then yes, in that case it may affect. Otherwise, it doesn't have any effect on your count, motility, and volume as such. So we can say that misconception are there, misconceptions हैं, but please misconceptions को उतना ही रहने दीजिए. Visit your doctor, talk to your doctor and get timely advice. गूगल से आपको एडवाइस मिलेगा, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स भी आपको एडवाइस देंगे, बट वी रियली सजेस्ट दैट विजिट अ गुड डॉक्टर टू get to know more about your fertility questions, to get to know more about your own inner medical reproductive things. Dr. Akash, we can say that yes, we have completed the session. Many interesting questions were there. We answered, we rather tried to answer, and हमने शायद, yes, we have completed the queries. फिर भी अगर आपके पास कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रह गए हैं जो आपको लगता है आप नहीं पूछ पाए, प्लीज लेट अस नो, वी विल डेफिनेटली अरेंज अनदर सेशन विद यू डॉक्टर आकाश. आज हमने सिर्फ मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात की, बट व्यूअर्स, डॉक्टर आकाश के साथ हम जरूर बात करना चाहेंगे एम्ब्रियोज से रिलेटेड. He is a known embryologist and we really don't want to miss this opportunity to have you with us in another upcoming session. Maybe next month or so, we'll definitely plan. So thank you, viewers, and thank you, Dr. Akash. Thank you, Shield, for arranging such a interesting session with Dr. Akash. Thank Thank you, you, Doctor. Ms. Purnima. Thank you, Shield, and thank you to all the patient listeners, I would say. And I would say each one is unique. Just to sum it up, later you get professional help and you'll be in the better hands at that time and with the best results possible. So take care of you and your lifestyle and maintain a good health. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you. Thank you, Ms. Purnima.